हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रशंसा। आज हम पढ़ेंगे एवरीडे ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स। चैप्टर नंबर 6, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। Transformation of sentences involve changing the form of sentence without changing its meaning. Remove to. सबसे पहले हम ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का पहला हम एग्जाम्पल है रिमूव टू। टू एक वर्ड है जो सेंटेंसेस में ऑफन आते रहता है। वो टू को हटा के कोई और वर्ड ऐड करो या मत ऐड करो, ऐसे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हो जाएगा। ये फर्स्ट रूल है। The offer is too good to be real. The offer is so good that it cannot be real. ये सेंटेंस का मीनिंग सेम है लेकिन हमने सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया। इधर है ऑफर इज टू गुड टू बी रियल, इधर नेक्स्ट सेंटेंस है द आंसर इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी रियल। टू को हटा के हमने सो यूज़ किया, तो हमने इसका कैन का कैन नॉट अपोजिट फॉर्म यूज़ करके फिर सेंटेंस ट्रांसफॉर्म किया। रनिंग इज़ टू गुड नॉट टू बी एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड। रनिंग इज सो काइंड दैट शी विल extend a helping hand. In our examples, we observe the following. A positive sentence on removal of to becomes negative. A negative sentence removal of to becomes positive. दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। दूसरे एग्जाम्पल्स है हेमंत वॉज टू टायर्ड टू आर्ग्यू एनी मोर। हेमंत वॉज सो टायर्ड दैट ही couldn't argue anymore. India's success story is too good that it cannot be emulated. India's success story is so good that it should be emulated. Remember, while removing to, we may use very. It is too cold here. It is very cold here. हम टू को हटा के very, excessively या extremely का भी यूज़ कर सकते हैं। It is too difficult situation. It is an extremely difficult situation. They were taxed too much. They were taxed excessively. While transforming, if the sentence is in present tense, sentence with is, am and are etc. use cannot. The sentence in past tense, sentence with was, were etc. use could not. अब हम यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसमें से एडवर्ब टू को हटा के वेरी, एक्सट्रीमली या एक्सेसिवली का यूज़ करेंगे। द ओल्ड वुमेन वॉज टू फैमिश टू कंटिन्यू द जर्नी। द ओल्ड वुमेन वॉज एक्सट्रीमली फैमिश टू कंटिन्यू द जर्नी। द न्यूज़ वॉज टू गुड टू बी बिलीव ब्लाइंडली। द न्यूज़ वॉज वेरी गुड टू बी बिलीव्ड ब्लाइंडली। द गर्ल वॉज टू टैलेंटेड नॉट टू बी सिलेक्टेड। That girl was very talented not to be selected. I was too scared to venture alone. I was very scared to venture alone. The allegation was too serious to be ignored. The allegation was extremely serious to be ignored. She was too filled with pride to seek help. She was excessively filled with pride to seek help. It was too heinous a crime to be ignored. It was very heinous a crime to be ignored. He is too well-mannered to speak rudely to anyone. He is very well-mannered to speak rudely to anyone. The mob was too shocked that he should not run helter-skelter. The mob was extremely shocked to not run helter-skelter. His eyes were too filled with dreams to see the consequences of his action. His eyes were excessively filled with dreams to see the consequences of his action. Active and passive voice. Verbs may be in the active voice or passive voice. Read the following examples. A girl is watering a plant. यह है active voice. A plant is being watered by girl. Passive voice. Active voice मतलब गर्ल खुद बोल रही है या फर्स्ट पर्सन बोल रहा है। पैसिव वॉइस मतलब कोई सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन बोल रहा है। गर्ल प्लांट को पानी दे रही है। प्लांट को पानी मिल रहा है गर्ल के थ्रू। इन सेंटेंस ए सब्जेक्ट इज डूअर ऑफ द एक्शन एंड सब्जेक्ट बी द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। इन सेंटेंस ए इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म एंड कैरीज आउट द एक्शन स्टेटेड बाय वर्ब। सेंटेंस ए में जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के हिसाब से काम कर रहा है
और सब सेंटेंस बी में सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से काम कर रहा है। कुछ एक्टिव वॉइस है। द बॉयज डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स, द टीचर वॉज टच्ड बाय हिज ऑनेस्टी, शी एडवाइज्ड मी टू प्रैक्टिस द सम, हिज एक्शन शॉक्ड द फैमिली, द पुलिस विल फाइंड द क्रिमिनल। Observe that the above sentence subject carries out the certain stated by the verb. Definition: when subject completes the action indicated by the sentence is said to be active voice. जब subject जो action दिया हुआ है वो complete कर लेता है तब उसको active voice बोलते हैं। अब passive voice: the sportsman was felicitated by them. Sportsman was felicitated by them. The birds were released by the kind boy. इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? काइंड बॉय रिलीज द बर्ड। लेकिन कोई दूसरा पर्सन बोल रहा है इसलिए वो बोलेगा बर्ड वर रिलीज्ड बाय काइंड बॉय। ऑल द कोर्स हैव बीन कंप्लीटेड बाय द ग्रुप। फूड वॉज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। द मिशन विल बी अकम्पलिश्ड बाय द साइंटिस्ट। इन द above sentence we observe the following: the subject is acted upon the verb. The subject of the active sentence become the object when transformed into the passive voice. एक्टिव को जब हम पैसिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक दूसरे से। वर्ब नो लॉन्गर रिमेन्स फाइनाइट इन द पैसिव वॉइस। वर्ब फाइनाइट नहीं रहता है पैसिव वॉइस में। When the subject of sentence is a receiver of an action, the sentence is said to be passive voice. जब सब्जेक्ट रिसीवर हो जाता है एक्शन का तब उसको पैसिव बोलते हैं। जब सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेता है एक्शन तब एक्टिव बोलते हैं और जब सब्जेक्ट रिसीवर रहता है तब पैसिव बोलते हैं। अब हम सीखेंगे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अलग अलग टेंस के सिचुएशन में। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा तब एक्टिव वॉइस है द टीचर एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट। इसका पैसिव वॉइस रहेगा द कंसेप्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय टीचर। द हीरो किल्स द विलेन्स, द विलेन आर किल्ड बाय हीरो। ये आपको कैसे वर्ड के इधर उधर ट्रांसफॉर्म करना है आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा, वो एक दो एग्जाम्पल्स पढ़ने से नहीं होगा। सिंपल फ्यूचर टेंस वी शैल अकम्पलिश आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव। आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव विल बी अकम्पलिश्ड बाय अस। सिंपल फ्यूचर टेंस में ये है, लेकिन हमें हर एक टेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है ये ध्यान में रखना होगा ताकि हम वर्ब का और टेंस का अच्छे से यूज़ कर पाए। द गार्डनर विल रिमूव द वीड, द वीड विल बी रिमूव्ड बाय द गार्डनर्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द स्टूडेंट हैव completed the project, the project have been completed by the student। The citizens have informed the authorities, the authorities have been informed by the citizens। Past perfect tense the principal had spoken to the students, the student had been spoken by the principal। Mark had eaten the cake had been eaten by Mark। Do and learn identify whether the verb are an active voice or passive voice। यहाँ पे हमें पता लगाना है कि वर्ब एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, फिर उनको उस हिसाब से चेंज करना है। He teaches us good values, good values are teaching by him। A boy is flying a kite, the kite is flew by the boy। A picture is being drawn by her, she is drawing the picture। ये ऊपर के सेंटेंस एक्टिव वॉइस में था, हमने उनको पैसिव में कन्वर्ट किया। ये वाला सेंटेंस पैसिव में था, हमने उनको एक्टिव में कन्वर्ट किए। Who called the police? The police is called by whom? The organizers will be thanked by him, he will thank the organizer। The child was appreciated by the teacher, the teacher appreciated the child। By whom was this permission granted? Who granted the permission? Somebody has taken my wallet, my wallet is taken by somebody। She offered food and shelter to him, food and shelter is offered by him। May God shower upon you this choicest blessing। इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। टिक द सेंटेंस दैट आर इन एक्टिव वॉइस। जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है उसको टिक करना है। द ऑफर वॉज गिवन बाय हिम, ये पैसिव है। दे फॉलो द रूल्स, एक्टिव। द ग्रुप अपलॉडेड हिज एफर्ट। हेमा डजंट स्पीक रूडली टू अदर्स,
Active. You don't interface in the matter. Active. Everyone will agree with us. Active. Does the boy admit his mistake? Active. Ali bake a cake. Active. His mother welcomed us. We arranged the picnic. ये दोनों भी एक्टिव वॉइस है. चेंज द वॉइस. अब जो एक्टिव में है पैसिव में कर देना है, पैसिव में है वो एक्टिव में कर देना है. PV Sindhu broke another world record. The another world record is broke by PV Sindhu. I know my duties and responsibilities. Duties and responsibilities are known to me. Sheila did not accept her mistake. Mistake is not accepted by Sheila. They had given up on him. They had give up. The scriptures throw light on important values. The important values light is thrown by scriptures. She showed her humane side to us. The humane side is shown by her. My mother narrates me the stories. The stories are narrated by my mother. We will not put up with injustice. The injustice will not put upon us. He owns a palatial house. The palatial house is owned by him. The invitation was declined by her. She declined the invitation. Kind verbs. Let us understand two concepts in the sentence. Subject and object. हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट आप समझ लो जिससे सेंटेंस स्टार्ट होता है, जिसके बेस पर सेंटेंस रहता है. राम इज़ अ बॉय. तो इसमें राम कौन है? बॉय. राम के ऊपर पूरा सेंटेंस बना हुआ है. राम बॉय है. वर्ब क्या होता है? जो हम काम कर रहे हैं उसको वर्ब बोलेंगे. और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहा है वो ऑब्जेक्ट हो गया. लियोनार्डो डा विंसी किसके बारे में बात कर रहा है? मोनालिसा के बारे में बात कर रहा है. और वर्ब क्या हुआ? काम हो रहा है, क्रिएटेड एक काम हो गया. सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट डिस्कस्ड इन द सेंटेंस. समवन और समथिंग इन्वॉल्व इन द सब्जेक्ट एक्शन और द ऑब्जेक्ट. Transitive verbs. Read the following example. The cricketer hit the ball out of the stadium. Cricketer hit the ball out of the stadium. Hit हो गया transitive verb. We were delighted to meet the president. Were delighted. The verb in the above sentence take an object. जो verb है above sentence में वो एक object को specify करते हैं. The verb in sentence which take object are defined as transitive verbs. जो सेंटेंस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे उस वर्ब को बोलेंगे यहाँ ट्रांसिटिव वर्ब्स. कुछ और एग्जांपल्स है. आई सेंट अ लेटर टू माय ग्रैंड पेरेंट्स. ही लेफ्ट हिज फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड ऑफ टाइम. माय मदर लुक एट मी टू द डॉक्टर. शी यूजुअली लीव्स अ मैसेज विथ हर मदर. द कैट पाउंस्ड ऑन अ रैट. Intransitive verbs. Read the following sentence. The word fly high. I was flattered. जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है उसको हम बोलेंगे intransitive verb. जैसे the words fly high, I was flattered. जो with a verb in the sentence that do not take object are called intransitive verbs. Other examples. The policeman arrived immediately. The girl was singing melodiously. The agricultural yield was encouraging. The response was disappointing. हम इससे ही पता लगा सकते हैं जब हम बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे इंट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव का, तब हमें इंट्रांसिटिव सेंटेंस कंप्लीट नहीं लगेगा और ट्रांसिटिव सेंटेंस पूरा कंप्लीट सेंटेंस लगेगा, डिक्लेयर्ड सेंटेंस लगेगा. द डोंकी वॉज कैरिंग द लोड ऑल डे. ये वॉज कैरिंग वर्ब है और ये है ट्रांसिटिव वर्ब. शी वॉज क्राइंग थ्रू आउट द डे. वॉज क्राइंग है इंट्रांसिटिव वर्ब. इसमें कोई ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई नहीं हुआ है. इसमें ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई हो रहा है कि लोड ऑब्जेक्ट है. द डॉक्टर एडवाइज हिम टू कंप्लीट द टेस्ट. एडवाइज्ड ट्रांसिटिव. द स्टार वॉज शाइनिंग ब्राइटली. इंट्रांसिटिव वॉज शाइनिंग. ही लाफ्ड एट द कंफ्यूजन विटनेस्ड. ट्रांसिटिव ही लाफ्ड. शी गेव अ गिफ्ट टू हर फ्रेंड. ट्रांसिटिव गेव अ गिफ्ट. They rested under the tree. Transitive. They rested. The monkey walked away. Walked away. Transitive. She always keep your promises. Or keep your. Transitive. She slept soundly. Transitive. Slept soundly. आई होप मैं यहाँ जो पढ़ाया आपको समझ में आ गया है.
तो भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछना और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। थैंक यू, बाय।